ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं भाषणं पुरुषधारणं प्रतञ्चवरनं हस्तैर्युधानं भूषणभुजं रक्तं रक्तोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् आविर्भूतञ्चक्षज्ञानपतये पुरुषात्परम् एवं ध्यायति योग्यं सयोगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रणतपतये नमस्ते स्तुवंबोधराय एकदन्ताय विविधनाशिने शिवसुताय श्री वरुणमूर्तये नमः। श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विजयो भिन्नराजो गुणाधिपः भूमकेतुः गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातापितृभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुभं शोभनमस्तु। वन्दे हरं वरदशूलकपालहस्तं स्थाभीतिमद्रिसुतयोज्ज्वलदेहकान्त्या वामोरुपीठगतया निजवामहस्त न्यस्तारुणोत्पलयुजा परिरब्धदेहं वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटे प्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां भुवनेश्वरीन्दां शङ्खारि चापशरभिन्नगरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरां शुक्लया विलसत्किरीटां सिंहस्थितां ससुरसिद्धनतां च दुर्गां दुर्वां निभां दुरितदुर्गहरां नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शोणाम्भोरोः संस्थितं त्रिनयनं वन्दे त्रयविग्रहं दानां भोजयुगाभयानि ददतं हस्तैः प्रबालप्रभं केयूराङ्गदहारकङ्कणधरं कर्णोलसत्कुण्डलं लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं वन्दे क्राब्दिं भजे। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञानगुरु सद्यो जात शङ्कराश्रम सद्गुरु इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। स्वामी सद्गुरुनाथ भगवान शंकरा तुम दिव्य सान्निध्यान तो हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्वांना मी मेळ्ळो सामुहीक जावन प्रार्थना करता आसतली की आमी स्वाम्यांनी परिकल्पना दवरली आमगेले समाजांतले युवकांक आनी नवीन हांगा मठांत आयल्यांक मठाचे संपूर्ण परिचय करून दिवंक आनी आमगेले म्हालगडांनी घालून दिसले एक सद्विचार म्हळ्यार गुरू धर्म आनी आमगेले जिवनाक चलोवपाक म्हळ्यार एक मार्गदर्शन आमी युवकांक कोण येवंक आमच्या दृश्टीन एक सर्वांक एकत्रीत करून न्हू तांकां एक 5 दिवस थंय हांगा रावचे वेवस्था करून शिबीर म्हणून एक परिकल्पना करून न्हू ताचें कार्यरूप केलें जावन आसा। तशी मस्त सुमार काळून करता आसा ती 5 दिवसाक हे शिबीर 5 दिवस पर्यंत आज सुरू जाता करता असल्या शिबिरांचे कार्यांतू निर्विघ्नतेने सर्व कार्य घडयेशी जावंक मात्र न्हय हाचे पूर्ण लाभांश प्रयोजन हांगा 7 सर्वांकय शिबिरार्थी जनांक प्राप्त जावंक तांकां म्हालगडे
गुरुपरंपरा मठाचे सर्व एक माहिती तांकां हे शिबिरा मूलक प्राप्त जावन तांगेले आमगेले मठाचे आनी तांगेले जिवनाचे एक संबंद अत्यंत दृढ जावंका आनी समाजांतू एक आदर्श व्यक्त जावन तांणी आस कामा दृश्टीने हे शिबिराचे मुख्य उद्देश हे मुख्य उद्देश साध्य करून नेमका अत्यंत गुमटायरी हे गेले की शिबिराचे कामां घडशी तो अनुकूल करून नेमका गुरुंगले भवानी शंकराला संपूर्ण एक आशीर्वादू आनी करचे प्रयत्न तूं यशस्वी जावन पूर्ण यशस्वी जावंका म्हणून सगळी प्रार्थना करता आसतली चलूंगा देवी माता जनयंत देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रे समोजन्धुहाना देनुर्वा तस्मानो वसुष्टुतैतु व्यन्दता नारदयेषु शत्रावः पराजितासो अपनिलयन्ताम् आमगेले गुरु परंपरेचे प्रथम गुरुंगले समाधी गोकर्ण मठांत आसा आमगेले परंपरा सुरू जाल्ली सरबजीत संवत्सर म्हणजे चांद्रमान पंचांगा प्रमाणे सरबजीत संवत्सराचे माघ शुक्ल सप्तमी म्हणजे इंग्लीश कॅलेंडरा प्रमाणे जनवरी 30th 1708 सोमवार ह्या दिवस आमकां गुरू प्राप्त जाल्ले गोकर्ण मठांतू त्या गुरुने हे परंपरा सुरू करून दिल्ली आनी तांगेले गुरुंगल सर्व एक हिस्ट्री म्हणटा ती परंपरेन बरोवन दवरला आसा तांतां कालांतू कलकले विशेष घडया ते बरो रेकॉर्ड केल्लो आसा प्रथम स्वामी समाधी गोकर्ण मठांत आसा ते आदी मठ म्हणून घेता तदनंतर तांगेले शिष्य परंपरा सुरू जाली ते शिश्यांगले प्रथम शिष्य म्हळ्यार शंकराश्रम प्रथम तांगेले समाधी हांगा मठांत आसा हांगा आमी होड समाधी म्हणटा ती म्हळ्यार हांवें शिलालेखा आशिल्लो समाधीन तूं म्हालगड स्वामी हे सो तांगेले समाधीचे स्थान हांगा आसा आनी हे देवस्थानांतू आमगेले गुरू परंपरेचे आराध्य देव जावन आसा भवानी शंकर हांगेले मुर्ती वैरी मंडपान दवर आसा भवानी शंकरू आनी सेकेंड स्टेपांतू रामो लक्ष्मण सीता आनी हनुमंतू हे देवांगेले मुर्ती आसा तशी आमगेले रामागेले विशेष आराधना चैत्र शुक्ल नवमी दिवस पालखी उत्सव जाता सो आम्हा रामाला भक्त होय तशीच हनुमंतच थंय रामाला सेवक आनी दत्तात्रेय गुरुंगले एक एक स्थान आसा तशीच कृष्णागेले एक विशेष आराधना मठान जाता तशी हे देवांगेले मोठी मुर्ती हांगा आसा ती सो हांगा आतां प्रथम रामपरा पांय पडून न्हू भवानी शंकराक आमी आतां मुखारी भुवनेश्वरी सन्निधी वचा मुख हांगा येत मठाचे 300 वर्षाचे समयाचेर मठांत एक शक्तीस्थान जावंक आमच्या दृश्टीने आमच्या स्वाम्यांनी भुवनेश्वरी तांगेले विशेषता आराधना करून देवीक स्थान हांगा स्थापन केल्या भुवनेश्वरी वरांकुशौपाश्यमभैतमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलास्तनस्थां बालार्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां भुवनेश्वरीं तां नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां श्रीभुवनेश्वर्यै नमः महागणपति सन्निधि नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे आमच्या अद्वैत संप्रदायाचे महान गुरु श्री शंकराचार्य स्थान मठांतू स्थापन केल्या शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः समाधीचे प्रदक्षिणां क्रमशः आमगेल्या मठांतू उत्सवाक अनुपयोग करचे लालकी पालखी हांगा आसा ती पळयता येयात हे कौटुंबिक देवालय घरान तूं कोणाक पूज असाध्य आसा पूज करूंक कळना तांणी मठान तूं हांगा देवाक हांगा दवरता ती हांगा त्रिकाल पूज जाता फॅमिली डेटी स्थान नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम आज थंय 179 फॅमिलीच्या हांगा दवरल्या ताका पुजे वेवस्था कॅपिटल बांदून बट्टो वेवस्था केल्या स्वाम्यान सांगिल्ले प्रमाणे आता प्रथम शंकराचार्य मांगले समाधी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः
हा खोड समाधी म्हणतात ती म्हणारी हांगाश्रय समाधी आणि तू महालगड स्वामी आहे तांगल शिष्य परिज्ञानाश्रम सेकंड शुद्ध स्फटिक संकाशम शुद्ध विद्या प्रदायकम शुद्धम सच्चित सुखानंदम शुद्ध पूर्णमहम भजे. हे सर्व देवस्थानांतून त्रिकाल पूज जाता सकाळी धुनपार आरती पूज जाता आणि विशेष सेवा म्हणा नित्या काही अष्टावधान सेवा व्हड देवस्थान जाता धुनपार पुष्पांजली वगैरे जाऊन दीपनमस्कार वगैरे कोंगिनो आम्ही नित्या सांग रेकॉर्ड कशी करू का म्हणून बी मिनी कशी करू का म्हणून सांगितलं असतं त्याप्रमाणे चलतं असतं. हांगले शिष्य शंकराश्रम सेकंड तांगल समाधी मल्लापूर मठांत असं ते एक मठ असतं मला मठ केंद्र असं तांगले शिष्य केशवाश्रम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. केशवाश्रमांगले शिष्य वामनाश्रम तांगले समाधी मंगळूर मठांत असं थंय मग मठ केंद्र असं आमगेलो समाधी मठ म्हणतात ताका. तांगले शिष्य कृष्णाश्रम स्वाम्यांगले समाधी हांगा असं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः. आमकां की प्रतिवर्ष तेरू पळयतात तेराचे उत्सव पळयतात ते तेर सुरू जाल्ले हे स्वाम्यांगेले कालाक तांगले शिष्य पांडुरंगाश्रमांनी अशें व्यक्त केलें की आमी हांगा लागींच वेंकटा म्हणून एक देवस्थान आसा थंय तेर चलता तेरा मोर्चा हांवें म्हणून गुरू विचारलें खंय त्या गुरून सांग खंय तशें मसूं जायना आमीच मठान सुरू करुया म्हणून सांगीन न्हू शिश्यांग सांग मिरपाणी तांगेले एक देवानी चिकी केली की ताणें एक हें जालें एक निमित्त जालें त्या निमित्ताने मठान तूं तेर सुरू जालो कृष्णाश्रम स्वामी कालका आनी ते चैत्र शुक्र पुर्णिमे दिवस कला दवरले की म्हळ्यार आमगेले आदी हांगाचे शिरालीन तोले शंकराश्रम हांगा तांकां हे जाले दिवस शिष्यस्वकार जाले दिवस त्या दिवसाक हांगा तेर दवरलो चैत्र हनुमान जयंती दिवस. ही पांडुरंगाश्रम समाधी हांगा आसा आतां थोडे थंय रिपेर चलता आसा स्वाम्या सांगन तांगें मन नाश म्हणून करता आसा ती तेजे कला म्हळ्यार लिंगांत अशें कल आसा म्हणटात देव कला आसा ते कला आमी एक कलशांत आवाहन करून घेवन ते कलशांत नित्या पूज करता आसा थंय हांगा बेश्टे करून अशी सालान वचता ती पांय पडा ती तशी देव तक देवन येया ती अशी वचून अशी येया ती तूं थंय रावता घेवन राब अशी वचून तशी येया ती. लिंगांत तशें जीवकला म्हणटा ती सानिध्य ईश्वराक सानिध्य गुरूंक सानिध्य थंय समाधीन तूं आसा जाल्यार शिवतत्वाचें एक सानिध्य आसा तें लिंगांतानू कलशांत आवाहन केल्या ते प्रतो दिवस त्रिकाल पूज थंय जाता थंयची एक रिपेर चलता आसा फेब्रुवारी 6 तारीख एक प्रतिश्ठा दवरल्या जाता ती. आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि. गुरूंक सानिध्य हांगाचें आसा खंय वचनी हांगा हाची तुमी एक मनान तूं प्रेर करची हांगा पणशी हांगाची पांडुरंगाश्रम हांगेले सानिध्य हांगा आसा तशें हांगा येया ती पादुका सनिधी हांगेले समाधी कार्लांत आसा थंय ताणें स्वाम्यांनी 2008 तूं आमगेले मठाचे 63 वर्ष जाले दिवस तांगेले पादुका एक बरे विजृंभणेरी मठांत हाडून दवरल्या ती आमगेले हे केंद्रांत तूं स्वाम्यांगेले एक सानिध्य आसा कामा दृश्टीने सो हांगा त्रिकाल पूज जाता स्वाम्यांगेले हे जाग्यारी श्रीचक्र तांगेले पादुका प्रतिश्ठ केले दिवस. आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदां बुद्धिमज्जितम् आनंदाश्रमणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं खब्रह्माविष्टहृदयान् द्वैतध्वान्त दिवाकरान् प्रशान्ततान्तो भरतान् परिज्ञानाश्रमान् नुमः. आता हांगा आशिल्ले देवतांगले धुळपेटन घेतल्या तुमकां प्रसाद दितलो हो मठमामो हांगा तीर्थ प्रसाद तीर्थ घेवन मुखार वचीत.
तपसाचलन्ते वैरोचने कर्मफले दुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयातव्यो अस्मान् स्निग्धदुर्गाणि विश्वाः ओष्ठपृथ्वी बहुलान उर्वे भवात् लोकाय तनयाय शय्योः भवन ओम दीपो ज्योति देवतायै नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ॐ दीर्घतमामदेयोर्जुर्वां दशमे युगे अपामतो यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैवेऽमृतत्वमानशुः परेण नाकं विहितं गुहायां विद्राजदेहद्ययो विशन्ति वेदान्तविद्यासंन्यासयोगादिलेषुधरद्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परावृता परिमुच्यन्ति सर्वे नरं विपापं परमेषु पुण्डलीकं पुरमर्दिसर्गस्थं तत्रापितमं गगनं विशोकस्मिन्नन्तसुभाषितव्यं यो वेदादोऽस्य प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य ब्रह्मविदेकस्य परस्य महेश्वरः इदं फलमया देव स्थापितं पुरुषत्वं येन मे सफलवाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सभा प्रारंभ प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। दक्षिणासि समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता श्रेया गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शुद्धशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्णपाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर। परम पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस शिविर की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा होंगी। धृतिमान विल रीड आउट द प्रतिज्ञा इन कोंकणी और आप सब उसके बाद दोहराएंगे। सौम्यांगेल अनुमती घेवन आता करसेवा प्रतिज्ञा करूया। लेट्स ऑल स्टँड अप। हांव म्हणटा सगळ्यांनी रिपीट करता म्हणून विनंती। विश्वात्मक श्री भवानी शंकर देवाक गुरु परंपरेक आणि परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजींक साक्षी दवरून
हांव शिबिरार्थी ही प्रतिज्ञा करता परंपरागत आमकां प्राप्त आशिल्लो मठ हो गुरू परंपरा आनी गुरू हांगेल मार्गदर्शन प्राप्त करचे उद्देशाने श्री चित्रापूर मठाच्या पवित्र परिसरांतू करसेवा करचो संकल्प करता गुरूंगेले निरीक्षणांतू सेवा करतची नूतन प्रेरण घेवन जीवनांतू अनुशासन सतर्कता आत्मीयता आनी परिष्कारू हाडूक प्रयत्न करता गुरू प्रेरित स्वयंसेवक जावच्याक प्रयत्न करतची श्री चित्रापूर मठाची गरिमा आनी चित्रापूर सारस्वत संस्कृती वृद्धिंगत करता गुरू परंपरा मठ आनी गुरूंगेल्या संगाती आशिल्ल्या आध्यात्मिक संबंधाचो सदैव अनुभव करूक प्रयत्न करता नित्य व्यवहारांतू स्वाभिमान दवरून सर्व बांधवांगेल्या संगाती प्रेम आणि प्रामाणिकतापूर्वक कार्य करतची आत्मशक्ती जागृत करचो प्रयत्न करता आत कृष्णानंद हेबलेकर माम चीफ कोऑर्डिनेटर चित्रापूर शिविर्स स्वागत भाषण करतली. फिर एक बार जयशंकर और आप सबका इस कर सेवा शिविर 2025 में स्वागत है. मैं कृष्णानंद हेबलेकर और मेरी संचालक टीम आपके साथ है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल अस, वी विल अटेंड इमीडिएटली. हमारे बीच आज श्री संजय शेट्टी माम हैं. उनका इंट्रोडक्शन कुछ देर बाद होगा ही, लेकिन संजय शेट्टी माम हमको हड्डियों के बारे में कुछ बताएंगे. यानी खुद की हड्डियां सुरक्षित रखते हुए दूसरों की कैसे तोड़ी जाए, इसका थोड़ा सा ज्ञान वो देंगे हमें. तो इंट्रोडक्शन उसका बाद में होगा. अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वे हमें उपदेश सुनाएं और आशीर्वाद दें. आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदां बुद्धिमज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ओं श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. करसेवा हो एक विलक्षण कार्यक्रम मठांत जाताच 2007 धरून आमी मठांत आयोजीत करचे धैर्य केलेलें. हाजे पयलें कॅम्प सायट्सार जातालें. आतां इंट्रोडक्शन इत्यादी कुट्टी मामाने हिंदींतूच केलेली मी ती आमकां, बिकॉज इट्स गोईंग लायव्ह, इट विल बी रेकॉर्डेड म्हणून. कलदेवी आतां कोंकणी येत न्ही गो. हां, सगळ्यांकय कोंकणी येता, अभिनवाकय येता. भुमा तर कातर तो कोंकणी आनीक जाय. सो कोण आसा ती, कोणाक कोंकणी कळना हांगा? यू बेटर लर्न. So I'll speak in Konkani. You'll have to meet people and ask, what did Swamiji say? Good interaction, force you into opening up. So we've had shivers here. I'll go international. But it was only in 2007, after 7 years, I dared to have a Karaseva Shivir with all these youngsters coming in the mutt.
तो आई वाज वंडरिंग कैसे होगा, यहाँ तो पूजा वगैरह चलती रहती है और ये भीड़ आए तो क्या होगा, बट इट इज़ कमिंग आउट बेस्ट, really good. I'm very happy, and something new is being added. The latest is, that's why I don't want to take too much time, Sanjay Shetty Ma'am, whom I have known for so many years. He is exceptional, but he'll give you the best. Okay? Make the best use of it. It is the need of the hour. Like last time, what we had a small shibir, August में, क्या नाम रखा था उसका? उत्तिष्ठत, arise. And I want that. I found a difference happening in just those 2 days sessions here and subsequent even, I think, 2 sessions in Karla. So don't lose that. Again, demand that he teaches you some techniques and then have smaller groups like Bangalore, Bombay. Even when you can do it in Chennai, you have got a sweet little cousin who's very aggressive, be careful. So don't lose those skill sets. Okay, you learn something, you hold this and you pull that, yeah. But you don't have to, where should I hold? Get a instinctive zamka. Don't lose those things. So even on a physical level, yes, because it's going to build that internal resolve. Finally, as far as I am concerned, it will develop into nishtha. Nitaram sthiti mandati. Bhayankar ek shraddha. You understand these are bhakti aska, shraddhaska and manatati. But through a lot of enduring, a lot suffering or confusion, having to make choices when everything is looking very bleak. Everything that you hold dear is questioned. Still you continue with one nishtha, guru nishtha manatati, whatever, shastra, ishtadeva tantu. That has to come. So situations will be provided by Sanjay Ma'am. He'll put you through that where immediate response is required. And then your personal sadhana, the seva that you do, it will fructify into something very beautiful. That is the purpose of the ascent. So I don't want to take too much time. I want you all to, as I had said last time, I seriously envy you all. At this age you are getting this. My volunteers are really going to give you something excellent, plus this inclusion which will help you manifest that latent nishtha that all of you have. But then I want to see results on Pavan. So I don't think I'll be coming repeatedly during the Shibir, but Ammi Yattatmari Tumgel Tayari Zai. Aaj Ashil ve Tayari. Ashil. Ani Tayari Koru Zatta. Like what? I don't know. Tu sang. You have to learn to see it from my point of view. That is where your seva elements will come into play. Correct? Why no? When you are in seva, Guru seva is the most precious. Now I can't give you all of you opportunities every time. Makes sense? Is it possible? I have 2 or 3 sevaks. But through this, I can give you. Don't waste that opportunity. And it's a way of thinking, seva. We are obsessed with ourselves, right? So in seva, what happens is, when you are attending on me, I'll scold you. In public, you are getting reprimanded. So what are people thinking? Wo bhid jayegi. It doesn't matter. I am in seva, I need to deliver. Ek dhairyam cha surzata. Arthuzata sa. Unfortunately, I keep repeating this, it just remains in theory. But from you all, I'll demand. Then it will be anticipation. So Amji is going to come here. He's going to, something happens here. He's going to sit. So those 5 minutes when you plan out, sort of meant individually also, because this is not a very sophisticated setup. You slowly graduate to that. When there's a big sammelan, I need more help. But right now also you can do a lot. So individually you can just say, tuck, 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 tuck. Okay, then what happens? What will be required, etc., etc. So keeping that in mind, Deepa Prajwalan, 5 wicks. Who's going to do that besides Swamiji? You are accountable for that, even if Kutti Ma'am is responsible. And I want you to take the burden off his head. Last time I had to yell a lot. Here I just had to take one name. I don't accept this. Otherwise I'm not going to ask Sanjay Ma'am to come here. It's a sheer waste. He's got better things to do. Do you understand? Jhap kar le.
कचक 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 करतच राहते. जस्ट मूव असाइड फ्रॉम द ग्रुप, थिंक, कॉल अनदर पर्सन. तशी अँटिसिपेट केल्यार by leaps and bounds you will progress in these small things, and that will show in your daily life. In any emergency and all, you won't be confronted, everybody chattering, no, we can do this. They'll instinctively turn to you. Actually, what should we do? That quiet confidence, a clarity evam chasudata. Don't miss these opportunities, because that love is there, and for me it will be a great thing. So Tashi, it's just an example. I give the same examples. I thought I'll give something new. But you have a right to make a difference. Do you understand? हम कल करचे हैं तथा करते not in your group, because you are potentially sevaks, शिष्य तुम्ही. So ते एक प्रार्थना करूया. ताजे आम्ही व्याख्या केलेली, ताजेर मागे चिंतन कराती. ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. सीधा शांति मंत्र है, शांति शांति शांति. बट व्हाट इज द प्रेयर आफ्टर विच आई कैन से शांति 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 एट ऑल लेवल्स? Hey, don't disturb me, I'm so sensitive, let me be happy, then okay. No. आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः. मे माई इंद्रियाज, वाणी है, प्राण है, पंच प्राण है, चक्षुः श्रोत्र, ये क्या है? इंद्रियां हैं. थ्रू विच आई शब्द स्पर्श रूप रसगंध आई टेक ऑन, आई अंडरस्टैंड, आई परसीव. सो दोज मे दे बी एंडोर्ड विद स्ट्रेंथ. बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि. दैट इज द फर्स्ट प्लेयर. गुरु सेवा करनी है, शास्त्र अध्ययन करना है, वहाँ पे आश्रम की सब काम करना है, तब क्या चाहिए? बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि. वाई? सर्वं ब्रह्मोपनिषदम. द फाइनल स्पिरिचुअल गोल इज नॉट लॉस्ट, इज नॉट फॉरगॉटन. इट इज सेड सर्वं ब्रह्मोपनिषदम. सब जगह शिव शिव ही है. दैट इज वॉट आई हैव टू अचीव. दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. So, but I want that strength. Magal Sharira, Dhrida Samka, my Indriyas should be extremely strong. I should be very receptive, but not collapse under the pressure of what the Indriyas give. I should be able to understand and respond correctly. Sarvam Brahmopanishadam. And a very pertinent prarthana, Maham Brahma Nirakuryam. निराकरण कहते हैं ना, कुछ बताया गया, हाँ मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, पर मुझे नहीं करना है, बस कट्टी, और मेरे से नहीं होगा, वॉट एवर, और जस्ट इरिटेशन, और अनफॉर्चुनेटली एज यू ग्रो अप अहंकार. दीज आर द फैक्टर्स विच भगवान का भी निराकरण हम कर सकते हैं. सो प्रार्थना करता है शिष्य, जैसे मेरा बल बढ़ेगा, मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा, कहीं मे आई नॉट बी मिसलेड और मे आई नॉट लूज साइट ऑफ माई गोल. सो एट एनी स्टेज, एट नो स्टेज शुड आई do the निराकरण of God. I am self-sufficient, I don't require. ये कभी नहीं आया है मेरे में, because after all I am nothing compared to the power of Shiva. I am totally dependent on him. एक कुछ हो गया तो ख़त्म, फिर अभी टॉइं टॉइं हो रहा है. माहम ब्रह्म निराकुर्याम, देन मा ब्रह्म निराकरोत. भगवान भी मेरा निराकरण नहीं करे, ये भी प्रार्थना है. सही बात ना? मे आई नॉट रिजेक्ट गॉड, may God not be so displeased with me, बस out.
ऐसे कभी नहीं हो. May my mistakes be forgiven because I accept and I want to rise above them. And they are all born of weakness. Even what you say, ahankar, is a weakness only. What is the weakness? A person who is unsure only will have ahankar. Correct? The other person is learning. I want to learn. Why should I get stuck? So ये कमज़ोरी जो है, दौर्बल्य है, उसको हटाओ, ये प्रार्थना. मामा ब्रह्म निराकरोत. इस प्रकार से अनिराकरणम में अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु. परस्पर. May I always seek that divine inspiration in whatever I do, when things are going on well and when things look very bleak. May I never lose sight of the goal. And at the same time, don't think I have achieved the goal. I am moving towards it. So I want all the strength that is required to make the grade, so to say. माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोद. ऐसे इस प्रकार से अनिराकरणम में अस्तु, अनिराकरणम में अस्तु. फिर जाके तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु ते धर्माः मयि संतु, मयि संतु. और इस पथ पे मैं जो हूँ निरत हूँ, आई एम कटिबद्ध हूँ. आई वॉन्ट टू मूव अहेड. आई एम नॉट गोइंग टू वॉक आउट. आई एम नॉट गोइंग टू से आई विल टेक अ डे ऑफ, आगे देखेंगे करके. तो इस प्रकार से जो मैं निरत हूँ इस पथ पे, ऑन द स्पिरिचुअल पाथ एट एवरी स्टेप, ऐसे मुझ में all those divine qualities that are expressed in the Upanishads as mandatory गुण म्हणतात एक बड़े साधक का लक्षण, may they manifest in my heart. इस शरीर में अभी जीव भाव में हूँ, तो शरीर पुष्ट हो जाए, बुद्धि दृढ़ हो जाए, मन में एक ओजस्वता रहे, भावनाओं की शुद्धि आए, और वो जो दिव्य संपत्ति है उपनिषदों में जो बताया है, गुण है, लक्षण म्हणता थी, may I achieve those, वो सिद्ध हो जाए, ताकि मेरा जीवन एक, let it be a wonderful expression of the शिव तत्व, manifestation of that. ऐसी प्रार्थना हमने की. And then you can say, Om Shanti Shanti Shanti. Then you have the right to say that. Otherwise you are praying Shanti Shanti Shanti. You don't want that. Out of strength you can demand, you command that, and you get it at increasing depth. That is Shanti. शिव स्पर्श होगा, शक्ति प्रकट करेगी. फिर से शिव स्पर्श होता है, ध्यान करते हो, then you get more inspiration and you manifest that. That is life. The rest is keeping away death. So you want life. अच्छी तरह से करना. I'll be meeting you later after 3-4 days and taking a full क्या हुआ अब तक and next बचे कितने, how many total, कितने, how many days? आज ही, sorry? 7 days. Wow, good. All 7 days attend? सगळी? Good. हे मंजेश्वर आंगेलियन निवेद हुआ 4 दिवस आमचे शेणी. अय्यो तुल गुरु तो मेळणी. You staying for 7 days? 4 days now? Okay, all of you see, this girl is going to say only, lady now, she is married. Only for 4 days. Why didn't you raise your hand? Jhamp. You are also leaving. How many days, ma'am? This is 1 day. Tomorrow? And what time? Morning, evening? Okay, so 2 days. Okay. Okay. Good. But I'm glad you made it. I'm very happy. Oh, somebody is getting stronger and stronger. Oh, that is how many days? Oh, 1, 2, huh? Good. No jams. I understand you are busy. Even, travel itself takes 1 day, return 1 day. You're making time. I'm very happy. Eknishta asल्या तशी जाता. So don't jump when I ask you. I'm just taking stock. So I just need to know, okay, you're leaving after 2 days or whatever. If I have to meet you all, I'll just meet you all, 3 of you first, and the rest I can meet later. That was the whole idea. Oh, somebody is becoming brave. You'll have to tell your name. Purna Jatak. Now kal hai? Sahil Gatte, meeting on 30th. 30th. Any other? Not stragglers, early goers. This is reverse. This is a real Chitrapur Saraswat. Gantya, I'm done. 1, 2, 3, 4. Okay, those who dared to say.
but do make the best of whatever time you get. You made available. I'm very happy. And there'll be subsequent shivers also. There also you can come. It can be just a one-day camp or something in Karla. Make use of that. Bangalore, Mukhari or Hangasudai. Very good. I'm very happy. Gomte Kunkar aati. एक भजन कोर कावे हगूर एक कोरिया I'm Giltala. I'm just saying hello to Shirali weather. कई घाट का तेल पी के आए पानी नहीं हे पंचवदना हिमगिरि सदना हे पंचवदना हिमगिरि सदना प्रपंच शमन पार्वती रमण पंच शमन पार्वती रमण हे पंचवदन हिमगिरि सदन हे भूताधिप हे भवभावन भूताधिप हे भवभावन हव्यगुणालय भस्म विभूषण हव्यगुणालय भस्म विभूषण भुवनैक गुरो भालविलोचन भुवनैक गुरो भालविलोचन भवानी प्रियकर तांडव नर्तन भवानी प्रियकर तांडव नर्तन हे पंचवदन हिमगिरि सदन प्रपंच शमन पार्वती रमण हे मृत्युंजय हे वृषवाहन हे मृत्युंजय हे वृषवाहन पाप विनाशन नाथ त्रिनयन पाप विनाशन नाथ त्रिनयन सोमपुरांतक नागाभरण
पुरान्तक नागाभरण भवानी प्रियकर तांडव नर्तन संवित प्रकाशक साधक भरण संवित प्रकाशक साधक शरण हे पंचवदन हिमगिरि सदन पंच शमन पार्वती रमण पंच शमन पार्वती रमण हे पंचवदन हिमगिरि सदन भजनों में भी वही भावना व्यक्त होती है. We are directly appealing to the source of all this power that we seek. Let it manifest in my इंद्रियाज इत्यादि जो प्रार्थना की है, तो वो स्रोत जो है उसी से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं. भवानी प्रिय कर तांडव नर्तना, भवानी प्रिय कर जो सृष्टि करे उसका आनंद ले और तांडव से फिर संहार भी करे, ऐसी शक्ति. सो एक विरोधाभास सा दिखाई देगा इन ईच लाइन. देयर इज समथिंग फैंटास्टिक एंड जस्ट द ऑपोजिट ऑल्सो इन दैट सेम एक ही पंक्ति में. मेडिटेट ऑन दैट बिकॉज दैट इज लाइफ एंड दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू. So the whole purpose is you get a lot of information of the Shivir. You understand, you can connect better. पहले information, then oh I like this, and then the connect. I would like to participate in these activities इत्यादि. एक आपको मौका दिया जा रहा है. सही बात ना? यहीं आए with your parents, some puja happened, then what? The food was good. Then the Bhattu explained the whole yajna etc. very nicely. Then nothing else. Then some people after, they go see the museum, they see the Goshala, they see the women empowerment projects and come and congratulate me, and I say, क्या कहाँ थे इतने साल, अगले जन्म में करना है, participate man. Ashamed that you have to congratulate. It's my volunteers, they are doing so much. अभी तो connect करके, so you people are connecting at this age, I'm very happy. But remember this. In a nutshell, I'll tell you, अभी कुछ कार्यक्रम हो और suddenly you're called on the stage or you have to, very gross example pertaining to this year. I don't want you all to have a sense of apprehension. क्या होगा, you understand? I don't want you to blank out also. Or it is so pre-planned, मुझे इतना करना है, मुझे इतना बोलना है, आगे पीछे I am not involved. No. Then what? You should have some sort of anticipation. एंटिसिपेशन यानी फुल क्रम जो है मन में बैठा रहेगा. अभी पहले somebody is going to speak, after that something is going to happen, after that what is the all of you are accountable for everything that happens here. Do you understand? So that उसमें जो विचार जाएगा, then your correct productivity will show. Otherwise it is just tension. मेरी कब बारी आएगी, will I muck it up or what? That if you want to remove that apprehension, that tension, you'll have to give your mind correct steps to think. And then I'll be very happy. You'll be real sadhakas, you'll become shishyas. Otherwise, nuisance, liabilities. I don't want liabilities. And I don't want partial shishyas. So aspire for that. So the best way of overcoming your apprehension, of course, your breathing and what techniques, when accosted, kya karna, let that fire come out. You should be able to say no. Ek drishti se you should be able to prevent a lot of nonsense. At least don't invite, sir, what can I do? Abel mujhe maar nahi hona hai. Wo to first thing you'll learn. But command respect, you can't demand.
All those things will come up, and then the expression in the remaining part of the Shivir, you will get plenty of opportunities. So eliminate that apprehension. Apprehension is the sense of kya hoga, by putting your mind, chup बैठो, हाँ, एक से एक टक 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 स्वामी जी आएंगे, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा. Put your mind in that. So you'll start anticipating. You'll know instinctively something is bungling. You'll come there and quietly attend to it. Do you understand? Those are skill sets also I want you all to learn. Makes sense? Doable? Okay. We have these nataks, and nowadays I don't sit. Since last year I have absolutely Cheldwang and Natak. And as you know, Cheldwang, they are all varying heights. So the mics have to be adjusted. I find where there is maturity, the main volunteers, whoever is generally the teachers, Prarthana Varg and all, they'll just come, adjust the mic and go. Sometimes they are so cautious, they don't want to disturb. So I am sitting there in the audience, we are all viewing, the natak is going on here, and the child is blaring away nothing because the mic is somewhere there, so that it has to be reset. So one Pachi just crawls up slowly, very, very, she doesn't want to, disturb anything. Hagu, run, hagu, she'll set it and she'll go back. Till she gets out of sight, there is so much tension, apprehension. Aa jao, lagao, jao. You won't even be noticed. Do you understand? So this also you have to learn. Once that apprehension goes, once that anticipation comes, then the actually kya hota hai? Uttishtata aayega. So if you don't get opportunities, you are not pushed into it, you won't know how to deliver. You will still understand, but then it will become post-mortem. Jagrata. Actually, it should have been done. I don't want to ever hear that. You were there, you could have done it. I'll hold all of you responsible now, not just accountable. Understood? Accept? Mahadev, Mahadev, Mahadev. Gomte kon karati.